We'll start our. Okay, so let's start with this system design resources from Integrity. I've done the first part, which is video processing. So I'll start with the second part, which is cluster and workflow management. That's it. Facebook, what's that? What's the name? Heading? Mm, there are a lot of things. I'll just read it. Okay, it's efficient, reliable, a cluster management at scale with Twin. Let's go to it. So today's systems scale conference represented Twin, our cluster management system, which orchestrates containers on millions of servers um, to run nearly all of our services. Since we first deployed in 2011, our infrastructure has expanded from one data center to a fleet of 15 geo-distributed data center locations. Over the same period of time, Twin has evolved significantly to keep pace with our growth. We are sharing several areas in which Twin advances the state of the art for cluster management, including single purpose stateful services, a single control plane across data centers, and the ability to shift capacity among services in real time. We will also share some of the lessons we have learned as we have grown the system to its current state. Twin serves multiple stakeholders. Application developers use Twin. With Twin or Twine, we have to get the pronunciation right. Pronunciation. Twin. Twine. Twine. Okay, so Twine serves multiple stakeholders. Application developers use Twine to deploy and manage applications. Okay, they want to deploy and manage applications. Okay, so it packages an application's code and dependencies into an image, much like what Docker does, and deploys it onto servers as containers. Okay. Containers, containers provide containers provide isolation between multiple applications. Okay, containers provide isolation between multiple applications running on the same server, right? So within the same server computing the system, we have like scores from multiple applications. Okay, so how does this join, right, provide isolation between the multiple applications running on the same server? We'll see that, allowing our developers to focus on application logic without worrying about how to acquire servers or orchestrate upgrades of the application. It's much like what AWS provides you. Web services on the cloud. Moreover, Twine monitors server health and upon detection of a failure, moves containers away from the affected area or the server. Capacity engineers use Twine to enforce server capacity allocation across teams. Okay. Capacity engineers use okay, who are capacity engineers? Let's say okay, capacity engineers provide reports and training analysis on voice and data performance, latency, and utilization with Sniffer, network monitoring tools, etc. So basically, they look into the statistics, right, of an application like the data performance, the latency, bandwidth utilization, network monitoring, and so on and so forth.
Okay, so capacity engineers use Twine to enforce server capacity allocation across teams uh, based on budget constraints and business priorities. They also leverage it to help increase server utilization. Data center operators depend on Twine to properly spread continuous load or data. They also leverage it to increase server utilization. Like data center operators depend on Twine to properly spread their containers throughout our data centers and to stop or remove containers during maintenance events. This helps data center operators perform server network and facility maintenance with minimal human intervention. Twine architecture, or is this PRM region? Okay, TW Twine frontend. We send a request to the Twine scheduler proxy. It goes and fan out an aggregation. TF scheduler SL request allocation. TF program allocator. TF program scheduler is hard. I can get it. Twine architecture. So PRM is one of our data center regions. Okay, so basically, so PRM is one of our data center regions. Our region consists of multiple data center buildings. PRM1, PRM2, located next to one another. We are moving toward one control plane per region that manages all the servers in that region. Application developers deploy services as joint jobs. The job consists of multiple containers, typically all running the same application binary. Twine is responsible for container allocation and container lifecycle management. It consists of the following components. Okay, the Twine front end provides APIs for the UI, CLI, and other automation tools to interact with Twine. It hides the internal details of Twine from job owners. The Twine scheduler is the control plane responsible for job and container lifecycle management. It is deployed at regional and global scopes, where a regional scheduler manages servers from the same region and a global scheduler manages servers in multiple regions. Okay, the Twine scheduler is the control plane responsible for job and container lifecycle management. It is deployed at regional and global scopes where a regional scheduler manages servers from the same region and a global scheduler manages servers from multiple regions. The scheduler is started. Mm, okay, each chart manages a subset of jobs in its scope. This is one scheduler proxy hides the internal details of scheduler sharding and it provides abstraction uses usability of a single control plane to Twine use. The Twine allocator is responsible for the assignment of chaos. Hmm. The Twine allocator is responsible for the Twine scheduler proxy hides internal details of scheduler sharding and it provides abstraction usability of a single control plane to Twine use. The Twine allocator is responsible for the assignment of containers to servers. The Twine allocator is responsible for the
assignment of containers to servers. Hmm. Okay, the orchestration of containers start, stop, update, and failover. बाद में अभी तो टाइम पढ़ना है. Hmm. The orchestration of container start, stop, update, and failover is done by the scheduler. Currently, one allocator is scalable enough to handle an entire region without starting. Note some differences in terminology from other systems. For example, the term scheduler maps to the Kubernetes control plane, and the term allocator maps to the Kubernetes scheduler. Mm, Resource broker stores the source of truth to server information. Resource broker stores the source of truth for server information and maintenance events. We run one resource broker per data center, and it stores information about all servers in the data center. Resource broker and a capacity management system. For the resource allowance system, vertical is dynamically decide which user deployment manages which server. A health check service monitors servers and stores their maintenance. The health information in resource broker is a service unhealthy or needs maintenance. Resource broker informs allocator and scheduler. If the server's unhealthy needs maintenance, resource broker informs the allocator and scheduler to stop and move the containers to another service. The join agent is a daemon running on every server, and it's responsible. Okay, it's responsible for setting up and tearing down containers. Applications run inside containers to provide better isolation. Yes, in reproducibility, we discussed how individuals run containers better. One agent is a daemon running every server and is responsible for setting up and tearing down containers. Applications run inside containers to provide better isolation and reproducibility. We described how individual join containers are set up using images, BTRFs, C group features, and the system D at last year's system scale event. Distinguishing features of Tron. So while Tron shares many common features with other cluster management systems like Kubernetes and Mesos, it distinguishes itself in the following areas: seamless support for stateful services, a single control management, a single control plane managing service across data centers to help automate intent-based container deployment, cluster decommission, and maintenance, transparent routing of the control plane to scale up, and elastic compute approach to set capacity among services in real time. These advanced features grew out of the need to support our diverse set of stateless and these advanced features grew out of the need to support our diverse set of stateless and stateful applications running in a large scale shared fleet. Seamless support for stateful services. And one's main critical stateful services that support persistent data. Okay, so products spanning Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp. Examples include large key value stores, examples ZPDB, and monitoring data stores, example ODS, Gorilla, and Scuba. Supporting stateful services is challenging because the system needs to ensure that container deployments are resilient to large-scale failures, including in network partitioning and power outages.
Common practices such as spreading containers across fault, supporting stateful services is challenging because the system needs to ensure that container deployments are resilient to large scale failures, including network partitioning and power outages. Mm, Well, common for practices such as spreading containers across fault domains. Spreading containers across fault domains work well for stately services. Stateful services require additional support. For example, if a server failure renders one replica of a database unavailable, should we allow automated maintenance that will perform kernel upgrades from 50 servers out of a pool of 10,000 to proceed? It depends. If one of those 50 servers happens to host another replica of the same database, it's better to wait and not lose the two replicas at the same time. Dynamic decisions which control maintenance and system health require visibility into the internal data replication and placement logic of each stateful service. An interface called task control allows stateful services to weigh in on decisions that may affect data availability. The scheduler leverages the other interface to even an interface called task control allows stateful services to weigh in on decisions that may affect data availability. The scheduler leverages the interface to notify external applications of container like lifecycle operations such as restart, update, migration, and maintenance events. A stateful service implements a controller that directs client when it is safe to perform each operation, potentially reordering or temporarily delaying the operations as needed. In the example above, the database's controller can tell client to operate 49 out of 40 servers, but temporarily leaving a particular service in eventually the kernel upgrade deadline passes and the database still cannot recover the failed replica. Client will proceed with upgrading servers in so many stateful services running on time. Use a task control indirectly through shard manager, a widely used programming framework building stateful services at Facebook. Twin allows developers to specify their internal logics. Twin allows developers to specify the intent for how containers should spread through all data centers. Shard manager allows developers to specify the intent for
क्या पूछना? किस बात में? मैंने प्यार क्यों किया? हाँ। हाँ। हम्म। आज क्या? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। यही है दुनिया। बुरा मन है कुछ है नहीं। हाँ, ये सब ऐसे वैसे ही होता है। कुछ अलग तो नहीं। ऐसे ही चलते आ रहा है। ऐसे ही चलते आ रहा है। मिल सकती थी पर नहीं मिला। ठीक बोला जाए। पीछे पड़ते पारवे ना। छेड़ेगा। पीछे वाला। हम्म। इजी इजी। मैंने स्टेटफुल। हाँ। वैसे मुझे एमसीक्यू चाहिए, मुझे पता नहीं। एमसीक्यू चाहिए। ऑप्शंस। अब हर चीज में तुरंत नहीं बोल सकता। ताड़ाताड़ी, हाँ हो जाता है। बोलिए। पता नहीं। Many stateful services running on Twine use task control indirectly through Shard Manager, a widely used programming framework for building stateful services efficiently. Twine allows developers to specify the intent for how containers should spread through our data centers. Shard Manager allows developers to specify the intents for how data shards should spread across containers. Shard Manager is aware of the data placement and replication of its applications, and it works with Twine through the task control interface to plan container lifecycle operations without applications direct involvement. This integration greatly simplifies stateful service management, but that is not all that task control supports. For example, our large web tier is stateless and uses task control to dynamically adjust the speed of updates across containers. As a result, the web tier can rapidly perform multiple software releases per day without compromising availability. Managing service across data service centers. Well, when Chrome was first created in 2011, every server cluster was managed by a separate dedicated scheduler. At that time, a cluster as was a group of server racks connected um, to common network switch. A data center hosted multiple clusters. A scheduler could manage servers only within a single cluster, which meant a job could not span across clusters. As our infrastructure grew, cluster and decommissions become increasingly frequent.
Since one could not migrate a job from to be decommissioned cluster to another, other clusters transparently, decommissions require large amount of manual effort and careful coordination between application developers and data center operators. This process often resulted in significant wasted resources, as servers idled for months during the decommissioning process. Introduce resource worker to solve this clustering decommissioning problem and to coordinate all other types of maintenance events. Resource worker tracks all physical information associated with a server and dynamically decides which. हेलो 7 बजे करो थे बंद हाँ सही टाइम है ना तो लाए देखो ठीक चले टेंशन ना ठीक है फिर हम पढ़ रहे ठीक है कहाँ मैंने फोन लगा मैंने राम पढ़े तो पढ़ेगा उसमें मानते तेरा पढ़ेगा ना कुछ है क्या मुझे बात करते हैं हम्म तो लाइब्रेरी के लगे खाना मिल ना गया डिनर सुबह से हम और की खान से आवाज काटते आवाज काटते मैं सुनना सुनना पाया एप्पल तो उसमें भी खाया तो ना पानी भी पच रहा है ठीक चला गया हम्म पाँच खाया था बिल्कुल पाँच ना उन्ना फाइव में नाइन लाख नाइन हाँ ते तो मैंने मिस को नहीं खाना तो खुद बनाओ जैसे कंजूस क्या तेरे तो छोटे बॉडी से कम खाए नहीं थे हम्म, ठीक है हाँ ठीक है म्यूट करे रात करे हाँ म्यूट कर छे
We introduced resource broker to solve this cluster decommissioning problem and to coordinate all other types of maintenance events. Resource broker tracks all physical information associated with that associated with the server and dynamically decides which scheduler manages each server. Dynamic binding of servers to schedulers gives flexibility for a scheduler to manage servers across data centers. Okay, so we introduce resource broker to solve this cluster decommissioning problem and to coordinate all other types of maintenance events. Resource broker tracks all the physical information associated with the server and dynamically decides which scheduler manages each server. Dynamic binding of servers to schedulers gives flexibility for the scheduler to manage servers across data centers since a twine job is no longer limited to a single cluster. Dynamic binding of servers to schedulers gives you flexibility for scheduler to manage servers across data centers. Since the join job is no longer limited to a single cluster, join users can declare their intent for how containers should spread across fault domains. For instance, a developer may declare her intent run my job across two fault domains in the PRN region without dictating specific availability zones to use. Join will take care of finding the appropriate servers to satisfy this event even in the event of cluster decommission or maintenance operations. Scaling to support a large global shared fleet. Historically, our infrastructure was partitioned into hundreds of dedicated server pools owned by individual teams. Fragmentation and lack of standardization incurred high operational overhead and made idle servers more difficult to reuse. Okay, at last year's systems scale, we announced our infrastructure as a service (IaaS) to consolidate our infrastructure into a large global shared fleet of service. But this shared fleet introduces new challenges with competing requirements. Scalability. Our infrastructure has grown as we added more data centers within each region. Further, a hardware shift to using smaller and more power efficient servers has resulted in each region hosting many more servers. As a result, a single scheduler deployment per region cannot scale to orchestrate the number of containers that can run on hundreds of thousands of servers in each region. Reliability. Even if a scheduler is highly scalable, the larger scope per scheduler means there is a larger risk of software bugs rendering an entire region of containers unmanageable. Fault tolerance in the event of large-scale infrastructure failure such as a network partition or a power outage means the servers running the scheduler fail won't limit the native impact to just a fraction of the region's software. Visibility. These points might imply that we will wish to run multiple independent scheduler developments per region. However, from a visibility perspective, maintaining a single entry point for the shared pool per region simplifies main capacity management and job management options. We introduced scheduler sharding to address the challenges in supporting a large shared pool. Each scheduler shard manages a subset of jobs in the region, which allows each scheduler shard manages a subset of jobs in the region, which allows us to decrease the risks associated with each deployment. As the size of the shared pool grows, we can add more scheduler shards as needed to support the growth. Joining users perceive the scheduler shards and proxy over a single control mainframe without having to interact with the numerous scheduler shards that orchestrate the jobs.
But that fewer shots are fundamentally different from our older generation cluster schedulers because the former was to control plane without statically starting this shared server feed by network topology. But increasing utilization through elastic compute. As our infrastructure footprint has grown, it has become increasingly important that we achieve high utilization of a server fleet so we can optimize infrastructure costs and reduce the operational load. There are two main approaches to increase server utilization. The classic compute approach is to downscale online services at off-peak hours, provide the feed of servers to offline workloads such as machine learning and map-reduced stuff. The resource overcommitment approach is to stack online services and batch workloads on the same servers and run batch workloads at a lower priority. A limiting resource in our data synthesis power. As a result, we prefer using small power efficient servers that provide computational, more computational capacity and everything. An unfortunate side effect of preferring small servers with less CPU and memory is that resource overcommitment is less effective. While you can stack multiple containers of small services with low CPU and memory needs on a single server, large services do not perform well when stacked on power efficient small servers. Hence, we encourage developers of our large services to heavily optimize their services to utilize the entire service. We achieve high utilization mainly via elastic compute. Okay, so many of our largest services such as newsfeed, messaging, and our front-end web tier exhibit a significantly diurnal pattern where their utilization drops significantly during off-peak hours. We intentionally downscale these online systems to run on a fewer servers at off-peak hours and provide the fleet of service to office workloads such as machine learning and web-reduced jobs. We have learned that it works best to provide whole servers as the unit of elastic capacity because large services are both large owners and consumers of elastic capacity and are heavily optimized to utilize entire service. When a server is freed up from I mean, online service at off-peak hours, from an online service at off-peak hours, this broker loans the server to a scheduler to run offline workloads. The online service extends the load spike, resource broker quickly revokes the loan server and works with the scheduler to return server back to the online service. Lessons learned and future works. Over the past 8 years, we have evolved to keep pace with Facebook's rapid growth. We are sharing some of the lessons we have learned in the hopes that they will be helpful for this operating a rapidly growing infrastructure. Prefer a flexible mapping between a control plane and the servers it manages. This flexibility enables one control plane to manage servers across data centers, helps automate cluster decommission and maintenance, allows dynamic capacity shifts via elasticity. The abstraction of a single control plane for vision greatly improves visibility for governance. The abstraction of a single control plane for region greatly improves visibility for job owners and provides easy management of large shared fleet. So that the control plane can maintain the abstraction of a single point of entry unit scale or fault tolerance is the control of plane.
Note that the control plane can maintain the extraction of a single point of entry if scale or fault tolerance concerns lead to the control plane being charged internally. By leveraging a plugin model, a control plane can notify some applications of this is Tupperware cloud management system is now called Tron. Tupper plus and like most of the things are going over my head. Let's go to the few things. Okay, it's twine. Twine. It's not twine, it's twine. Mm, next thing, Sita. And this is all beings evolve from food, production of food is in the production of food is dependent on rain. Rain ensures from sacrifice. Hmm? Zaman ये खोल लो हाँ ये खोलना बेटा मैं बिल्कुल नहीं फैन बंद करके ये खोल सकते पूरा ओढ़ना चाहिए वो हाँ ऐसे तो मच्छर लड़ता रहता है कुछ कर नहीं सकते सुबह हुआ फैस ठंड हम्म, किससे बात हुआ किसी से बात हुआ तो पार्टी का लाइफ ऐसी है बुरा मानना है कुछ नहीं ऐसे ही होगा कि इससे पहले कभी हुआ नहीं बुरा लगता है स्टार्टिंग में बुरा लगता है जब पता है कि ऐसे ही दुनिया चलता है ऐसे ही वर्ल्ड चलता है तो क्या ही कर सकते हैं चलने ना हम लोग काम काम में फोकस होना चाहिए फल की चिंता ना करो यही लिखा है गीता मिल जाएगा दूसरा तरीके से मिल जाएगा फल होगा मैं गीता पढ़ के कुछ नॉलेज दे दूंगा थोड़ा मोटिवेशन मिले कुछ नहीं कर सकते स्टोरीज नॉवेल्स पढ़ता था बचपन में पता है यही तो मैं तो फॉलो ही करता हूँ आई डोंट केयर पूरा पढ़ने के लिए बुक होता ही नहीं थोड़ा सा कुछ ले लिया था
तो क्या सीख मिला बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से? क्या करना चाहिए? हार्ट पंप करता है ब्लड को। एक ब्रेन होता है, एक सोल होता है। सोल, हाँ, हार्ट तो बस फिल्मों में ऐसा लगता है। कैसे बनाया मतलब? मेरा कभी एक हावी होता है कि एक कभी दूसरा हावी होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन जब बुरा लग रहा है? किसका सुनना चाहिए, ब्रेन का सुनना चाहिए या दिल का? हाँ, बुलाया भी नहीं। चलते रहेगा, काम चलते रहेगा, पहले खाना पेट पूजा इम्पोर्टेंट है। All beings are evolved from food. Production of food is dependent on rain. Okay. Rain ensures from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Okay, so know what is all beings are evolved from food. Production of food is dependent on rain. Rain ensures from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the indestructible God. Hence, the all-pervading infinite is always present in sacrifice. प्रसंग इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की आवश्यक क्या है? इसको कैसे पढ़ेंगे? अवश्य कर्तव्यता। ये तो मुश्किल है, नहीं एक साथ क्यों अलग अलग कर लेते हैं इधर? आवश्यक कर्तव्यता सिद्धि, सिद्धि है ना? करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की, यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करते हैं। देखते कैसे करते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बर, बरतता व्यवहार करता है, बरतता अर्थात लिखा है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्जुना, हाँ, बरतना। Arjuna, he who does not follow the wheel of creation, thus set going in this world, that is, does not perform his duties, sinful and sensual, he lives in vain. व्यर्थ में जी रहा है। कि अपना ड्यूटीज फॉलो करना चाहिए, हल्का चिंता ना। इंसान के हम्म, दोनों हार्ड है, दोनों हार्ड, मेरे दोनों ही हार्ड। क्या साल में का जिम्मेदारी मतलब
जैसे अभी हूँ, ठीक है। ह्यूम अभी मम्मी पापा के लिए मैं क्या हूँ? क्या? बड़ा बेटा हूँ। मतलब बड़ी बहन है, वो शादी हुई, ठीक है। हम्म, बड़ा बेटा ऑब्वियसली बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, बहुत सारी चीजें। तो मैं उसको पूरा करता हूँ। मेरे छोटे भाई बहन है, इवन भतीजा है, भतीजी है। उनको जब भी पैसा चाहिए तो मेरे को ही कॉल करें। तो मैं हूँ, मैं एक महीने से तैयार हो रहा हूँ। एक दिन जाना है मेरे को, दो तीन टी शर्ट खरीदने हैं, एक दो स्वेटर खरीदना है, एक दो सूट खरीदने हैं। मैं एक महीने से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आज मेरे मम्मी भाई बहन ये तीनों गए मॉल में। इतना इतना कहोगे आप? अच्छा अच्छा। हाँ, नीरज, 4,000 रुपये में इसको दे। तो 4 रुपये, फिर मैंने बाद में पूछा कि मम्मी क्या लेने गए? तो बोल रही कुछ नहीं, सबका स्वेटर लेना था। मॉल में। हाँ। तो मेरे को हंसी आ रही कि बता, हम एक महीने से तैयार हो रहे हैं, इन लोग लेके आ रहे हैं। मतलब सेल लगा हुआ था, इसलिए सब कुछ डिस्काउंट पे मिला। कितना डिस्काउंट मिलता है? मैंने कभी खरीदा नहीं मॉल से, इसलिए पूछ रहा तो डिपेंड करता है कि सेल कैसा चल रहा 50% मिल जाता है, मान के चलो। है। तो बाहर से तो महंगा ही होगा डिस्काउंट में। मैं भी मॉल में ज्यादा जाता नहीं, मैं प्रिफर करता हूँ मैं मॉल मैं जाता मॉल नहीं। में सिर्फ मूवी देखने गया हूँ, और दोस्तों का कभी कभी जैसे फेयरवेल हो गया, कुछ पार्टी हो गया तो चला जाता हूँ। और ऐसे बस हवा खाने चला जाता हूँ, घूमने के लिए बस। मॉल में चलो, इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। गर्लफ्रेंड बनाओ उसके बाद नहीं, कहीं जाने की आपको जरूरत फ्रेंड्स नहीं। काफी है। गर्लफ्रेंड खुद बोलेगी "बेबी, चलो"। वो चुतिया बनाते हैं हम लोग को। वो दूसरे बेबी के साथ चली जाएगी। हाँ, दूसरे बेबी के साथ चली जाएगी, उसको बेटर मिलेगा तो। वो तो है। बेबी बेबी कुछ नहीं। मेरा बाबू ने खाना खाया। मुझे अभी हंसी लग रहा है। एक उसका जो पति, जो एक, पति दिखा, एक शादीशुदा औरत को ऐसा कोई मैसेज करता है। शादी हुई लड़की को मैं समझ रहा हूँ, मजाक टेक्स्ट में। भेजी, मैं टेक्स्ट समझ रहा भेजी। हूँ। एक लड़की ले लो, बेटर है। एक्चुअली क्या था ना, मैं बात नीड। उस समय बात करने के मूड में था, ठीक है। अब वो बोली कि यार कहाँ जा रहे हो, फोन तो मैंने कुछ तो ऐसा करो इसको गुस्सा आ जाए, खुद ही हट जाए। तो ऐसे बोले कि मेरे बाबू ने इतना नचा है, और वो सच में ब्लॉक कर दी मेरे को। यार ये काम पे तुम आ जाते हो। वो डिलीट क्यों नहीं बस किया मतलब ब्लॉक करके डिलीट करना भूल गई, ठीक है। और ब्लॉक उसने किया था, मेरी डीपी जो देखी थी, अब उसको पति देख लिया। मेरे बाबू ने वो सब बीती बातें, पूजा अतीत में लगी। किसी को लाओ ताकि जिंदगी रंगीन बन जाए। तो दोनों पे यूज करते हैं, दोनों में मतलब खत्म हो गया। खत्म भी हुए। एक वो सिचुएशन आता है ना, हम्म। जहाँ उसका नाम बता, उसका वेट करो। गरीब इंसान है, गरीब। अब इतना अच्छा पैकेज मिला, गरीब गरीब हो। गरीब हो, परिवार गरीब है। हमारे जो डिप्लोमा वाले दोस्त थे ना, तो वो साले 8,000 की जॉब शुरू की 2018 में, 8,000। अभी बड़े बड़े लोग खाते हैं। ना 8,000। अभी कितना अभी अच्छे 30-35 जॉब करेंगे। सब ग्रोथ अच्छा बना, पर बहुत जॉब्स नहीं। है? अगर परिवार है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, तो कितना बेटर होता है अगर बीवी कमा नहीं रही मिनिमम 30 होगा, तो। मैक्सिमम कम तो कोई लिमिट नहीं लिमिट होना चाहिए, इंसान तो उसी लिए लालची होता है। होती। इंसान की लिमिट हो, वही बोल रहा था, लिमिट नहीं होता है। अब देखो मेरे पास आज पैदल जाता था नवाब में। पैदल जाना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर मेरे को कोई सॉरी साइकिल ऑफर करे तो मैं तुरंत ले लूंगा। नहीं, अगर मुझे कोई ऑटो की ऑफर करेगा, मैं चला जाऊंगा गाड़ी। बट मैं बता रहा हूँ, फिजिकली मतलब ठीक है। जब आज मेरे पास साइकिल हो जाएगी ना, तब मैं यार काश बाइक होता, पहले पैदल पैदल मारने में दिक्कत है, बाइक मिल जाएगी तो मैं काश कार होती, छोटा हो। ना तो अंत में शौक जो है ना, वो रेंज रोवर पे भी खत्म नहीं होती। रेंज रोवर के बारे में ये यार, रेंज रोवर तो ऑफ रोडिंग के लिए, काश रोज रोज मिलती। मतलब मैं पता नहीं वैसे, ये गांव में पैसे मतलब सब सोचेंगे, मतलब शहर से बंदा गांव जा रहा है, बंदा कितना मतलब
अपने को डिग्रेड कर रहा अपना लाइफ स्टाइल को। गाँव जाना पड़ेगा तो बट अब के गाँव ना गाँव नहीं रहते। सर बताऊँ कि क्या है, जाओगे तो गाँव में लोग जज करते हैं, क्या जज करते हैं? हाँ ठीक है, ठाक कमा लो, नहीं तो ऐसा बात नहीं करते। पीठ के पीछे बहुत बातें करेंगे। वही तो अभी बुक आपने बोला ना, कवरेज लाइक नहीं डिसलाइक या बैटलफील्ड नहीं वो डिसलाइक डिसलाइक द कलेक्टिव डिसलाइक। इससे क्या सीखना है? लोगों को जाने तो भाड़ में नहीं नहीं तो जी नहीं पाऊंगा। ये सीख होता है मतलब ये अपना बस यही लाइफ नहीं, कुछ और भी चीजें इसमें ना, जो राइटर है इसके साथ बहुत सारा ऐसा चीज हुआ जो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करता है। ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ये 5 मेरे को ऊपर में हिंदी करना। हाँ, पहले बार पढ़ रहा हूँ। नहीं आप पढ़िए, मैं सुनाऊंगा। हिंदी हिंदी में आप पढ़िए। प्रश्न यहाँ वह यहाँ जिज्ञासा जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार के सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य का पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। परंतु ये नहीं, ये संस्कृत नहीं, संस्कृत जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और रमन मतलब क्या होता है? मजे। जो मनुष्य परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन रम 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 तो दारू, रमन मतलब मजे, दारू पीते तो मजे करते हैं करने वाला और आत्मा में ही तृप्त अथवा हाँ आत्मा से ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। हाँ वही मजे करना। Okay, he, however, who takes delight in the self alone. अकेले में जो मतलब खुश रह पाएगा ना, वो बड़ा आदमी है मेरे लिए। And is gratified with the self. Self मतलब यहाँ भगवान को बोलना। Self. And is contented in the self has no duty. मतलब खुश, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझ में आज के वो तत्व विधिनाथ हो ना कृत्य वो पढ़ कर ना चाहते समझ में नहीं आएगा। कदा कदाचित दस उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रह जाता था। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित किंचित मात्र भी स्वार्थ का, अच्छा किंचित मतलब थोड़ा सा भी, जरा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। स्वार्थ ही नहीं। In this world, that great soul has no use whatsoever for things done, nor for the things not done. तो मतलब ही नहीं है फिर। Nor has a selfish dependence of any kind of or any on any creation. यह यहाँ तक भगवान भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उनके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना अवश्य कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न करना है, पर उनके मन के द्वारा लोक संग्रह के लिए श्रद्धा कर्म होते हैं। अब उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य करने का आगे। कभी कभी लगता है इसमें हिंदी हटाए बहुत सही, इतना टफ नहीं है, मेरे को टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों कि हम इंग्लिश पढ़ने हैं अभी तो। इसलिए तुम निरंतर आस्तिक आस्तिक एक्चुअली मुझे लिखा है, आस्तिक से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आस्तिक से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त। Therefore, go on efficiently doing your duty without attachment. अभी जो काम करते हैं अटैचमेंट होप नहीं होना चाहिए, डूइंग वर्क विदाउट अटैचमेंट मैन अटेंस द सुप्रीम। भगवान को चाहिए तो ये करना पड़ेगा। ए वो क्या हो गया ये, अरे
टूट गया, मतलब बहुत टूटा है वैसे। और ये मेरा निशानी है, दोस्तों का निशानी, दोस्तों ने मिलकर खरीदा था मैंने। तो वही एक लेके आया हूँ, सबने कुछ कुछ लेके गया। ये भी निशानी है अपनी गर्लफ्रेंड का। क्या? अरे जो एक्स है वो एक्स है, निशानी कुछ नहीं रखना। एक ही निशानी तेरे मुझे वो नाम मिट। ये दिख रहा है, मार का दिख रहा है, ऐसा कुछ कटा हुआ। ये मतलब लग रहा है कि मुझे यहाँ से गायब है बीच में, उसी का देखना। कैसे? लड़ते रहते थे पहले, मतलब गुस्सा हो जाता था तो उसको। प्रश्न पुरुष लोग में भगवान ने ये जो ये बात कही कि आस्तिक से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आस्तिक मतलब आस्तिक, नास्तिक आस्तिक जो भगवान को आस्तिक होता है जो भगवान भगवान को को मानता है, आस्तिक जो नहीं मानता। पुरुष लोग तो भगवान ने जो यह बात कहा कि आस्तिक से रहित होगा, आस्तिक से रहित होगा, मतलब भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं। रहित का मतलब क्या होता है? मजे करना। आस्तिक से रहित होकर मतलब मतलब क्या बोलते हैं, आस्तिक होकर या ना आस्तिक आस्तिक होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा। हाँ प्राप्त होता है, मतलब वही है, हाँ, आस्तिक से प्राप्त होता है। नहीं, रहित में करना। अब उस बात को पुष्ट करने के लिए जनकारी जनकारी क्या होता है, जनकारी पता नहीं पता नहीं। का प्रमाण देने सॉरी देकर पुनः अर्जुन ने अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। वाह, क्या बोला? जनकादि ज्ञानी जन भी आस्तिक रहित कर्म धारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। Okay, it is the action. Okay, through action without attachment. Learn that Janaka. कौन है जनक? जनक, वो जनक रामायण में उसके क्या होता है, परशुराम के ससुर जी का नाम, पर यहाँ ध्यान दे पड़ेगा। पता नहीं किसका नाम है. And otherwise, men reached perfection, having an eye to maintenance of the world order. कहाँ है कॉमा, कुछ समझ नहीं आया कैसे पढ़े इसको, मतलब कहाँ रुकना है वो समझ नहीं आया. मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, फिर कॉमा है या फिर लगातार पढ़ना समझ नहीं आ रहा. ऑर्डर टू यू शुड टेक, मुझे लगता है सही अच्छे से नहीं लिखा. नहीं कॉमन भूल था। नहीं या फिर नहीं कॉमा के अलावा भी कहाँ, कुछ तो समझ में आया मुझे है नहीं. हिंदी में क्या लिखा है वैसे ये, इसलिए लोक इसलिए संग्रह तथा देखते हुए लोक संग्रह, लोगों का कलेक्शन, संग्रह तो नहीं होता, कलेक्शन संग्रह करने से देखते हुए को संग्रह देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना है उचित. लोगों को मत देखो, कर्म करते रहो ऐसा. लोक संग्रह को देखते हुए मतलब लोगों का जो भी माइंडसेट है उसको देखते हुए भी तुम अपने कर्म करने योग्य हो, बस करना है. शुद्ध बुद्धि हो। ये लास्ट पे पूर्व श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है, तथा यही बात समझाने के लिए कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगे। but for whatever a great man does, that very thing other men also do. Whatever standard has he sets up, the generality of men follow the same. Obviously, महापुरुष जैसे करते हैं, सब तो वैसे नहीं करते ना. महापुरुष अच्छे करते हैं, बाकी लोग सब फॉलो करते नहीं बाकी सब नहीं करते. हैं। 100% तो मत जाओ, 100% 100% नहीं यार, 50% नहीं यार. लोग तो अलग अलग है ना. अब सब मोदी को फॉलो नहीं करेंगे, वही बोल रहा हूँ. जैसे मेरा कहने का मतलब है, एक पकड़ लेते हैं महापुरुष, किसको पकड़ेंगे? मैं गांधी को पकड़ लूँ. मैं खुद नहीं हाँ, वो हिस्ट्री में थोड़ा अलग दिखा है. अरे, हिंदू लोग अलग मानते हैं. गांधी जी भी ऐसा रहा था ना, मेरा दोस्त होते ना, गांधी लोग सेकुलर थे. मतलब ऐसे थे जो 15 अगस्त हो गया 26 जनवरी उस पर रात में नारा लगाते थे, सुबह सुबह फोन में महात्मा गांधी जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद,
अब क्या बोलते हैं, स्टेटस क्या डालते हैं, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। जब हम्म, पूरा डिटेल में स्टडी कर लेंगे क्या था, तब कहते हैं कि गोडसे जिंदाबाद। हाँ, इसमें तो बहुत बायस है। हाँ, दिखाया गया है उस तरीके से। मतलब मैं खुद बोलता, क्योंकि हम लोग को दिखाया था कि तो मुस्लिम लीडर्स जो आए थे, मतलब उन लोगों को अच्छे से दिखाया, अच्छा लगा। नहीं वो मैं बहुत, जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस को मैं बहुत मानता हूँ, मतलब वो तो काबिल इंसान उस समय का, काबिल इंसान। उसके नोटों में फोटो क्यों नहीं है? गांधी डिबेट गांधी डिबेट नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं है? फादर ऑफ द नेशन गांधी। तो उसका नहीं था क्या? तो ये नहीं था। लोग का उनका अलग अलग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो होता भगत सिंह हो गए। है। लास्ट पढ़ लेते हैं, एक बात लास्ट। बता, तुम्हें बुरा तो नहीं रखना, मैंने उसको बोल दिया। क्या? मैंने उसको बोल दिया था, मैं किसी और प्लेनेट पे जाऊँ, हाँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग होंगे। अगर हम उनसे पूछेंगे कि मुझे दुनिया के किसने बनाए, मैं भी किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा, क्या उनको पता रहेगा कि लॉर्ड ब्रह्मा जी ने बनाया है दुनिया? इस मैं भी मतलब मान नहीं सकता ना, मैंने नहीं देखा किसने बनाया। लोग बोलते हैं मतलब ब्रह्मा ने नहीं तो किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे तो नहीं बना होगा कुछ। बस इतना है कि मुझे इतना पता है, कोई है सुपर पावर। सुपर पावर अगर सारे ब्रेन को जोड़ दिया जाए ना और एक सुपर ब्रेन बना दिया जाए, तो उसमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगा जो यूनिवर्स को एनालिसिस, बस अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, बस और कुछ इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुष के नहीं। अच्छा आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर देकर वर्णन वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की आवश्यक आवश्यक कर्तव्य का। कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। हो गया नाम आज में के, आज के लिए इतना हो गया। मेरे पास अभी एक बुक है जो मैंने खत्म नहीं किया, ऑलमोस्ट नो, 80% खत्म हो चुका है। नोवेल। नहीं, हाँ नॉवेल है, एटॉमिक हैबिट। वो सब सुना है। मैंने 80% खत्म किया, वो बुक मेरे पास स्पेस कम था, पुराने वाले ना बुक। कभी कभी मतलब लोगों को भूलने का तरीका ना, एक ही चीज दो लोग बोलेंगे अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से, तो किसी एक का मतलब ज्यादा दिमाग में घुसेगा, वैसा होता है, तुरंत घुस जाता है, हो जाता है। बोलने का तरीका होना अच्छा क्या साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट मतलब मानते हो कि चाहिए। गॉड है? साइंटिज्म